हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू पॉडकास्ट वीडियो जहाँ पे ओजी बोल सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर मीर आलम सर के साथ मैं आज हूँ। सर से बहुत सारे चीज़ें हमें सीखने को मिलेगा। भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी लिख के लाया हूँ ताकि सर से हमें पता चले कि गाजर खाने से तो हमारा आँख ठीक नहीं होगा। तो वेलकम टू द सर। मुझे बहुत अच्छा लगा सर, आपके साथ ये वीडियो बनाने का मौका मिला मुझे। तो मैं कुछ सर क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके पास ताकि ऑडियंस को भी पता चले, मुझे भी बहुत सारा चीज़ें आपसे पता चले। तो पहले हम लोग थोड़ा इंट्रो इंट्रो ले लेते हैं सर। ओके। आपके बारे में थोड़ा बहुत आप बताइए सर। मेरा बारे में मैं खुद बताना पड़ेगा। अच्छा, फिर भी ठीक सर। ठीक है ठीक है। आई एम डॉक्टर मीर आलम सिद्दीक। आई एम प्रोफेसर DSCP Guwahati Medical College. I'm an ophthalmologist, eye department. I am professor in eye department, and I'm doing private practice in Lens Master. Lens Master Bhangagarh पे ही है, in Bhangagarh, just near the flyover, in the starting point of the flyover, near the petrol pump. In Google, you can see that Lens Master. In Lens Master, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ और मेडिकल कॉलेज में मैं गवर्नमेंट सर्विस करता हूँ, टीचिंग करता हूँ, लोग को पढ़ाता हूँ, and I'm the first PhD in Assam, North East. आपके बारे में बहुत सुना है सर। बाहर से भी आपने बहुत सारा चीज़ें मतलब सुना है, कुछ यूएस से भी कुछ किए हैं सर, ऐसा कुछ? यूएस में प्रेजेंटेशन किया, लेकिन मेरा रिसर्च वर्क यूके से रिलेटेड है। आई हैड रिसर्च वर्क इन यूके एंड इंटर रिसर्च एक्सचेंज प्रोग्राम इन यूके, सो माय मोर टाइम वाज इन यूके। ओके सर। सो सर मैं कुछ क्वेश्चंस लिख के लाया हूँ तो आपसे थोड़ा पूछना चाहूँगा। सर अभी फ़िलहाल के लिए बहुत सारा आई का प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो मोस्ट आप एक बात मुझे बताइए कि 2 रीज़न क्या हो सकता है कि आँखों की दिक्कत के लिए? सबसे बेस्ट जो आपको मिला मतलब कंप्लेंट, या बोल सकते हो 2 रीज़न क्या हो सकता है कि जिससे हमारा आँखों में दिक्कत हो रहा है फ़िलहाल के टाइम पे? दिक्कत मतलब क्या, दिखने का दिक्कत दिखने नहीं का सर? दिक्कत वही लाइक सो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपका पसंद, आपका क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैम्बर में क्या पेशेंट आता है? ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट आता है कि मुझे देखने का प्रॉब्लम है। तो देखने का प्रॉब्लम का अगर 2 भाग किया जाए तो एक है कैटरेक्ट का, एलर्ली एज का। कैटरेक्ट है मोतियाबिंद, मतलब हम लोग का जो भगवान ने दिया हुआ लेंस है वो ओपेक हो जाता है, वो एज के कारण होता है, और दूसरा कुछ न्यूट्रिशन कम का कारण होता है, और पोर न्यूट्रिशन एंड ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट एक्सपोजर या तो अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर, और तो हजारों कारण है, तो बेसिक कॉज ये है। तो कैटरेक्ट एक कॉज है, और एक है रिफ्रैक्टिव एरर जो चश्मा चाहिए। तो चश्मा फिर से न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, अच्छा। ज़्यादा मोबाइल देखना, ज़्यादा स्क्रीन टाइम, ये सब चश्मा का कारण तो है। ये बता दिया, तो इससे रिलेटेड मैं और एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर। लैपटॉप एंड मोबाइल फ़ोन कैसे मतलब हमारे आँखों में दिक्कत करता है, या जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनमें क्या असर होता है मोबाइल फ़ोन के वजह से या लैपटॉप की यूज़ेज़ की वजह से? Very bad the screen time, more the screen time, it is bad for the eyes. So हम लोग का बच्चा लोग, तो जो लोग स्क्रीन एडिक्टेड हैं, जो लोग मोबाइल एडिक्टेड हैं, उन लोग का तो आँख सब मायापिया हो गया। मायापिया है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा आजकल रिफ्रैक्टिव एरर मायापिया से सफ़र करता है। हम लोग का जितना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, सब कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एक टॉपिक या तो एक सेशन रहता है सिर्फ चाइल्डहुड मायोपिया, और डिस्कशन सिर्फ यही है, दो स्क्रीन टाइम, लैपटॉप का स्क्रीन टाइम, मोबाइल का स्क्रीन टाइम। मोबाइल स्क्रीन इतना छोटा है और इतना अक्षर रहता है, इतना छोटा छोटा अक्षर रखता है, इतना नज़दीक काम करना पड़ता है, तो आँख का स्ट्रेस की वजह से आँख इलंगेटेड हो जाता है, और इसकी वजह से चश्मा जरूरत है। ज़्यादा टाइम स्क्रीन टाइम देखने का कारण, ज़्यादा लैपटॉप स्क्रीन टाइम देखने का कारण ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है, ड्राई आई हो जाता है, उसको बोलता है तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है, स्किन रिलेटेड आई डिजीजेज है, रिफ्रैक्टिव एरर है, और एल्डरली एज में कैटरेक्ट है। ये वेरी कॉमनेस्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम्स इन इंडिया एंड इवन इन द वर्ल्ड। उससे रिलेटेड सर मुझे एक आपने जो चश्मा के बारे में बताया, तो उससे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा सर। जो मार्केट में था मेरा भी जो चश्मा है, उसमें कुछ ऐसा बोलते हैं कि ब्लू लाइट प्रोटेक्शन ग्लास या यूवी कट ऐसा कुछ बोलते हैं सर, या वर्थ इट होता है कि ये हाँ, लेंस वोट ब्लू होता कट है, होता है? वोट होता है। तो ब्लू कट लेंसेज, तो जितना मोबाइल से या तो लैपटॉप से या तो कंप्यूटर से जो
ब्लू रेज आता है वो प्रोटेक्ट करते हैं, तो जरा सा सेफ्टी होता है, तो ये तो 100% सेफ्टी नहीं है, वो स्क्रीन ही खराब है, तो उसका ब्लू का वजह से सब खराब नहीं है, वो छोटा अक्षर लेस ब्लिंकिंग, ये तो मेन कारण वही है, ब्लू भी जरा सा प्रॉब्लम है। और इसलिए ब्लू कार्ड लेने से जरा सा तो असर है, जरा सा तो इम्प्रूवमेंट होता है ब्लू कार्ड लेने से। और एक है यूवी प्रोटेक्शन, यूवी इज वेरी हार्मफुल टू आवर आईज। Cataract causes UV means ultraviolet rays, retinopathy, age-related macular degeneration. So multiple dry eye, multiple diseases, all these multiple diseases are caused by ultraviolet rays, and so it is advisable that we wear glasses with UV protection, even if we do not have refractive error, even if we do not require glasses, any power in our eyes, if we wear UV protective glasses, our eyes remain safe. If we go for sun, if we go for sun bath, if we go for that beaches, if we use UV protected sunglasses, वो आँख के लिए बहुत अच्छा है। सो उसके साथ जो एक सनग्लास होता है, क्या सनग्लास आंखों के लिए खराब है या अच्छा बात है जो यूज करते हैं सनग्लासेस? Sunglasses अच्छा बात है। अच्छी बात। Any glass for the eyes, glasses are always good because it protects the eyes. Mechanically it protects, and that UV, inbuilt UV in that lenses, sunglass lenses or whatever it is, that protects the eyes. So sunglasses are good for your eyes. So next question is melatonin good for health or not? Yeah, good for health. Okay, sir. Next question is, sir, uh, eating vegetables is not improving our eyes. Is it No, no, correct or no, not? no, no, no. Eating vegetables is very essential for our eyes. Not only for our eyes, for the whole health, it is essential because all the vegetables and fruits, they contain antioxidant, and our body creates lots of oxidative stress, free radicals, to stop this damage created by these free radicals and the stress related radicals. That antioxidants are required, and antioxidants are there in vegetables and fruits. We must and we must take fruits and vegetables every day, even if little it is, we Sir. must take it. सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर हम जो फ्रीक्वेंटली आंखों को धोते हैं या पानी डालते हैं आंखों में, क्या उससे कोई दिक्कत हो सकता है? We should Frequently we should मतलब clean our eyes externally. That is okay. But I remember जो जब मैं छोटा था तो खेल के आके ऐसे कल कर ऐसे वॉच किया था ना, that is not allowed. That injures the eye. That injures that injures the surface of the eye. So okay, lightly हम लोग आँख वॉश कर सकते हैं. वेरी फ्रिक्वेंट वॉश करना जरूरत नहीं है. भगवान ने हम लोग को आँख में पानी दे के भेजा है साफ करने के लिए. अच्छा, तो ऐसा कुछ ऐसा एक्सरसाइज वगैरह कुछ है क्या आंखों का मतलब सेफ रखने के लिए या विजन ऐसा आंखों के लिए तो बहुत जरूरत है. दूर देखना, दूर देखो, दूर ग्रीन देखो, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन पहाड़, ग्रीन ग्रीनरी देखो, वो तो आंख के लिए तो वो बहुत जो अच्छा सुना है. था 2020 रूल्स वगैरह कुछ ऐसा कुछ हाँ है है क्या? ऐसा रूल तो 20 है, बहुत सारे रूल्स है. इतना रूल्स बनने से तो लोग काफी कंफ्यूज हो जाएगा. इतना रूल्स जरूरत नहीं है. ओके सर. But you look at the distance. ओके. Look at the distance in green. As in whenever you are working, whenever you are working for in the computer for a long time, whenever you are studying in the books for a long time, then in between, after maybe 2 hours, after 1 hour, you go outside and see, look at the distance, green. That gives comfort to your eyes, ओके सर. relaxation. Maybe for 2 minutes, maybe for 20 minutes. Sir, next question is how to get specs removed? Specs removed. Yes, sir. So specs are good for your eyes. Okay, sir. It protects mechanically. It protects by its inbuilt UV rays. So there's no point removing specs if you require power. Okay, sir. So still, some people do not like to use spectacle. Then alternative is contact lens or LASIK surgery, and this kind of things are there. सर लेसिक के बारे में मतलब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन से भी लोगों को चाहिए होता है, तो लेसिक मतलब सबको ही थोड़ा बहुत नाम आता है, वो होता क्या है सर लेसिक सर्जरी? LASIK सर्जरी है एक सर्जरी जैसे लेजर यूज करके कॉर्निया रिमॉड्यूलेशन करते हैं, तो जरा सा कॉर्निया का पावर अल्टर कर देते हैं, तो चश्मा का कम वहाँ हो जाता है. बट दैट इज अ सर्जरी. बहुत लोग को पता ही नहीं है वो सर्जरी है. वो सर्जरी है.
And that surgery, it is not that it is the best alternative to spectacle. ऐसा होने से बेस्ट होने से तो दुनिया का वेस्टर्न लोग को तो सब all the western people they can afford LASIK very easily, but they do not go for LASIK. It is not that important and it is not that advisable or recommendable. Always spec is better than LASIK. सर मैंने एक क्वेश्चन भी इसके रिलेटेड कुछ लिया था, शुड वी गो फॉर लेजर सर्जरीज? आपके That is laser surgery. That is LASIK is the laser surgery. Oh yeah. Another laser surgery is there. You mean that smile? Did you mean Yes, smile? yes. Yeah, smile surgery, and let's say that is another laser surgery, and LASIK is another laser surgery. There are different laser surgeries. Okay, those are laser surgeries, but always spectacle is better if spectacle is not that heavy and it is not hampering your day-to-day activity. Like a actor, if an actor or actress she want to do action film or whatever film, उनको चश्मा होने से दिक्कत होता है तो वो लेसिक जाने से दूसरा बात है. एक आर्मी लोग को लेसिक जाने से दूसरा बात है. नॉर्मल लोग को स्पेक्टिकल इज बेटर, गुड इनफ. Okay, sir. So next question is contact lens versus specs. Again, same thing. Contact lens is to make you free from that spectacle, Okay, sir. but spectacle gives more protection, and contact lens because it keeps in contact with the eyes, it may cause some inherent problem like contact lens related infection, contact lens related injuries, and contact lens related dry eye. This may happen, so glasses may be better. But if you want one contact lens, you can use, but not 24 hours a day. 24. Not 24 hours a day. There should be limit, maybe 6 hours, 8 hours a day, and then there should be contact lens free time when on holidays and non-working days, when you are at home, when you are not requiring contact lens, you go for spectacle. Go for it. Yeah. So, thank you, sir. So, are regular eye checkups necessary? Very necessary, because you have asked me the question. Okay, sir. I would like to answer. I get some patients. The mother comes with the child. Child is 6 years. When mother shows me, and I treat, all of a sudden that child, I shall also show, I shall also consult, I shall also show. My eyes are having problem. The mother or the father says, no, how can you have eye problem? Come, they do not consult. That is the right time in the childhood. At least once, you must get your eyes checked, the children. Otherwise, they may go to a very bad condition, they may progress. So, childhood eye checkup is very important. Not childhood, usually elderly also eye checkup. Actually, advisable, yearly eye checkup for everybody. But we cannot afford, our normal patients cannot afford. That is why it is not done. Yearly eye checkup is very important. So, एक बात मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोगों से पता चला कि जो स्पेक्टिकल्स होता है या स्पेक्स जो भी है वो ईयरली चेंज करना पड़ता है कि नहीं, मतलब ऐसा कुछ होता है, चेंजेस आता है कि नहीं? इनका चेंजेस आता है तो करना पड़ता है, चेंजेस नहीं आता है तो वही चलेगा. मतलब चेकअप तो करना है. चेकअप करना है. ओके सर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, डायबिटीज के कारण कुछ विजुअल लॉस होता है क्या? हाँ, very bad effect on the eye. Diabetes causes irreversible blindness. So yeah, irreversible blindness, and that is why we should keep our diabetes blood sugar controlled every day. Okay, it is very serious situation and a very expensive treatment. सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल अस अबाउट आईओपी. सर लोगों को तो ऐसा बीपी के बारे में पता है, आंखों का प्रेशर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बता. आंखों का प्रेशर मीन्स हाई प्रेशर इन द आईज. That is intraocular pressure. That is a kind of pressure like our body has got pressure. The eyes also do have pressure. And if the eyes do have pressure, it may cause the permanent and irreversible damage to the eyes. And that is why while consulting an eye doctor, eyes pressure should be checked. Okay, sir. So normal कुछ IOP कुछ बता पाएंगे? Yeah, normal intraocular pressure is 10 to 20 millimeter mercury. But if it is more, there may be disease. And there is a disease, very serious disease, irreversible and very dangerous disease known as glaucoma. And that also is related to eye pressure. It is not eye pressure is causing that, but the treatment of glaucoma is reduction of eye pressure. Okay, sir. Sir, next question is क्या procedure है तो for becoming ophthalmologist? So becoming ophthalmologist is a very long procedure. First, you have to get admitted in MBBS course. After getting MBBS
only. So you know that everybody Yes, sir. nowadays there are so many coaching institutes, and through coaching institutes and coaching teachers, so you get trained to get admitted to MBBS, and then after getting MBBS again a long course, you have to do rural, and then you have to do again a PG entrance test, and after that PG entrance test, if you choose ophthalmology, then you can become ophthalmologist, and for that again another 3 years you have to study, Okay, sir. and after studying 3 years, you are eligible to appear in the specialization examination. If you pass in the examination, officially you have got that license to practice ophthalmology, but that's not the end. Okay. After that, you need very tremendous training that is known as fellowship or Fellowship. senior residency. After that, only you can become a proper as eye specialist. Experience matters, and your guides and your mentors and your teachers, if they are expert, will be expert. सर इसके साथ मैं कुछ चीज़ आपको पूछना चाहूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए तो हमारे टाइम पे नीट यूजी आ गया है फॉर एमबीबीएस एडमिशन। आपके टाइम पे क्या था सर? Old days were good days. For MBBS, not NEET, some medical entrance examination was there in my time, and I entered the medical college by that entrance exam only. And that for PG also we gave entrance exam. But before us, Yes. long before us, or 2 3 years before us, there was no entrance. It was mark basis. मार्क्स बेसिस मतलब क्लास 12 का मार्क्स से? Yeah, 12 का mark से medical MBBS, again MBBS का mark से PG. जी। That was old. बहुत पुराना बात है वो सब। तो आपसे जब स्टार्ट हुआ तब से तो एंट्रेंस आ गया था। Entrance. ओके सर। I entered medical by entrance. I entered post graduation by entrance, and everywhere by entrance. And I did by PG, there by PhD there also by entrance, everywhere entrance. सर आपने पीजी वगैरह कहाँ से किया था मतलब? जी। Assam से physical, and PhD mine was related to UK. यूके। ओके सर। Though it was in Assam University, so it was a mutual thing, I said that collaborative thing. सर सबको एक ही चीज़ उनको जानना चाहते हैं वो लोग सबको। मुझे भी एक क्यूरियोसिटी है कि आपको आपसे जाने सैलरी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। Huh? सैलरी। Salary of the ophthalmologist. So you want to be an ophthalmologist. So it starts in India maybe about starting salary maybe about 60,000-70,000 per month. But if you work in a much bigger institute, it may be from starting maybe 1.5 lakhs. That is a corporate institute. But in government sector, it is something like that. But earning is different. If you work more, you can earn more. That is not the only earning. That depends on time, time and expertise and your training. So if you're expert, you can earn more, ओके सर। much more. सर आपको लास्ट में हमारे ऑडियंस को मुझे भी क्या सजेशन देना चाहेंगे एंड उसके बाद हम लोग ये पॉडकास्ट एंड करने जाएंगे? Take green leafy vegetables regularly. Avoid addiction to screen. Mobile screen is harmful for children. Don't give them mobile to use. YouTube games and all games. Eye checkup is important. Do not neglect any diseases in the eyes. You get it checked up, and proper checkup, proper spectacle. These are important. So these are basic things. Whenever there is disease, the proper treatment is important. ओके सर। सो सर अभी आपसे यदि कुछ लोग मिलना चाहेंगे या उनके आंखों के चेकअप के लिए तो कहाँ पे आना पड़ेगा? Lens Master in Google, it is available. लेंस You मास्टर। dial Lens Master phone number. You dial phone number in the Lens Master 96133 40747. Another phone number 96133 40737. So I'm repeating 96133 40737. 96133 40747. All the numbers are same, only 4737 in Lens Master, and it is available in the net. तो आप सबको बताना चाहूँगा यदि सर से आपको मिलना है तो आप लोग लेंस मास्टर विजिट कर सकते हैं। वो गुवाहाटी में है। कहाँ पे? एग्जैक्टली भांगागढ़ फ्लाईओवर। ओके, तो आप लोग वहाँ पे आ पाएंगे या मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह दे दूँगा लेंस मास्टर का। तो वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट करके भी सर के साथ आप लोग डिस्कस कर पाओगे आपकी जितनी भी आँखों के प्रॉब्लम है और आप सर से कंसल्ट कर सकते हो।
आई होप आपको सारा चीज़ें समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आपके थैंक यू, थैंक आपका यू। कीमती समय मुझे देने के लिए। एंड तो कुछ चैनल के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? Your channel, I've seen your channels I've gone through. Really, you are brilliant. थैंक यू You सर। are very expert, and you have got enough and depth knowledge in ophthalmology. That's why you can ask. You could ask me so many questions and interesting, interesting. थैंक यू Huh? सर। Okay. तो बाय बाय। Bye bye.